Very good morning to all of you. My voice is clear. Please confirm me. Very good morning to all of you. My voice is clear. Please confirm me. Okay, fine. Let's wait few more minutes so some more people can join. Huh? Okay. Let's sit with a calculator. Okay, calculator good at ratio and give me answer while I am asking the calculations. So just read the data, whatever given in on a screen. So now I think I hope we have already completed center of gravity for one-dimensional element. Yes or no? Before mid-semester examination. Yes or no? We have already covered center of gravity for one-dimensional element.
and I hope all of you remember the concept of that, because I am not going to repeat anything. So I am assuming that all of you are knowing the concept of center of gravity and equation of center of gravity, because I have already teach all the things, all the basic requirements before mid semester examination. Okay, chaliye. So now first of all, try to understand data. Calculate center of gravity of T section. So on in below figure. First data is like that. और समटाइम एग्जाम में डेटा नहीं देता है, आपको सेंटेंस फॉर्म में डेटा देता है. तो कैलकुलेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ फॉर अ टी सेक्शन हैविंग अ फ्लैंज 100 by 20 mm एंड वेब 80 by 20 mm. अभी क्वेश्चन ये होगा ये फ्लैंज क्या है और वेब क्या है, यस और नो. ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, ये फ्लैंज क्या है और ये वेब क्या है, राइट है ना. तो चलिए पहले फ्लैंज क्या है और वेब क्या है वो समझ लेते हैं. Now can I draw schematically T section like this? Yes or no? इसको मैं T section बोल सकता हूँ, yes or no? Please give me reply. इसको मैं T section बोल सकता हूँ. Okay, so now this horizontal part that is known as a flange, and this your vertical element that is known as a web. Is it clear or not? Please confirm me. तो ये ऊपर का जो रेक्टेंगल है आपका फ्लैंज हो गया, नीचे का जो रेक्टेंगल है आपका वेब हो गया. ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? प्लीज कंफर्म मी. एंड समटाइम इन डेटा if figure is given, in that case total depth of the section is given like this. ये पूरा देते हैं 100 और ये थिकनेस आपको 20 देते हैं, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 80 mm, that is the part of the wave. Now keep in mind, actually whenever the dimension is given like this 80 cross 20, 20 cross 80, what is our tendency? First thing known as x and second is known as y. Yes or no? May I right? First thing is known as x and second thing is known as y. Yes or no? Please confirm in chat box. Right now, first thing we will consider as x and second thing we will consider as a y. So don't make a mistake like that. From this geometry, above geometry, it is clearly seen that your depth wala portion or your portion in y direction, that is a more than in x direction. Yes or no? So keep in mind, whatever the dimension given for wave, your depth is always more than your thickness. Is it clear or not? 20 by 80 di या 80 by 20 di, that doesn't make any sense. कोई difference नहीं बनता है. आपका डेप्थ ही 80 लेना है. Is it clear? आपको 80 का width और 20 का डेप्थ नहीं लेना है. Is it clear or not? Please confirm me. इतना क्लियर है? Okay, chaliye. Now, as we have calculated in a center of gravity of one dimensional element, same procedure we will follow. We have an equation for 2D element, x bar equals to summation ai xi divided by summation ai. We have already discussed this. And y bar equals to summation ai yi divided by summation ai. Yes or no? Yes or no? है ना, ऐसा हमने कुछ डिस्कस किया था. स्टूडेंट्स प्लीज गिव मी आंसर. ऐसा हमने कुछ डिस्कस किया था या नहीं किया था बिफोर मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन? याद आ रहा है कुछ? हमने जो एग्जांपल्स कैलकुलेट किए थे वो वन डायमेंशनल एलिमेंट के किए थे. x bar equals to li xi by summation li. Now we are dealing with a two dimensional element, that is your area element. Okay, so now for a T section, again just think like that. Suppose ये आपका T section है. So now we need to divide in a rectangle. So possibility देखिए, पहले आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा पॉसिबिलिटी चूज करते हो. इसमें ऐसा कुछ थंब रूल नहीं है कि आपको यही मेथड यूज करना है. फर्स्ट पॉसिबिलिटी, फर्स्ट रेक्टेंगल, सेकंड रेक्टेंगल and third rectangle. So you will divide this part in three elements. In second possibility, just make this straight line.
first rectangle and second rectangle. Okay, so basically I am preferring this method. You can also use this method. Is it clear or not? Please confirm. We are dividing the geometry into part. Is it clear? Because this is a area element. क्योंकि हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, लाइन में हमको लेंथ कैलकुलेट करना है. चलिए, बिफोर मूविंग टू एग्जांपल, सपोज दिस इज योर लेंथ ऑफ वेव, थोड़े सॉरी फ्लैंक. ओके, नाउ सपोज योर थिकनेस टी, ये पोर्शन भी आपका थिकनेस जितना ही होगा. यस और नो? मेरे को ये पोर्शन का विड्थ कैलकुलेट करना है. आई वांट टू कैलकुलेट दिस पोर्शन. यहाँ पे मैं शेड कर रहा हूँ अभी. नाउ आई एम नॉट, अगेन जस्ट मिनट, मैं ये स्केच में रिप्रेजेंट करता हूँ. आई एम नॉट डिवाइडिंग द पार्ट, बट आई वांट टू कैलकुलेट व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पोर्शन लेफ्ट साइड ऑफ द वेव एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पोर्शन राइट साइड ऑफ द वेव. ठीक है, सपोज ये सिमेट्रिकल है. व्हाट इज सिमेट्री? सिमेट्री इज नथिंग बट whenever we fold the geometry. Okay, whenever we fold the geometry, you will get an exact mirror image. That is called as a mirror or symmetrical. Suppose this is a symmetrical about y-axis. I am trying to fold this t section about y-axis, so this corner and this corner will be matched because of symmetry. Yes or no? In that case, this length will be calculated as, suppose this length equals to 100 mm, say 100 mm, and this thickness is equals to 20 mm. So can I say that मैं बीच का ये रेक्टेंगल रिमूव कर रहा हूं, तो ये जितना भी पोर्शन मेरे पास है वो इक्वल हो गए. यस और नो? यस और नो? ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मेरा इक्वल होगा. यस और नो? प्लीज कंफर्म मी. उसका लेंथ इक्वल होगा. तो कैसे कैलकुलेट करते देख लीजिए. टोटल लेंथ में से थिकनेस में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, यानी कि मैंने इतना पोर्शन रिमूव कर दिया है जो अभी मैं डार्क शेड कर रहा हूं. मैंने वी हैव ऑलरेडी रिमूव दिस पोर्शन, सो नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस टू राउंडेड पोर्शन ओनली. डिवाइडेड बाय 2 कर रहा हूं, तो मेरे को इंडिविजुअल लेंथ मिल जाएगा. यस और नो? प्लीज गिव मी क्विक चेक. इज इट क्लियर और नॉट? प्लीज कंफर्म मी. हाँ, चलिए तो हम एग्जांपल में शिफ्ट होते हैं. वी आर गोइंग टू consider upper rectangle as a part number 1 and lower rectangle as a part number 2. As we have discussed in one dimensional element, we are starting to view our geometry from extreme left and extreme bottom. Just a minute. Extreme left and extreme bottom. We are going to visualize our geometry from extreme left and extreme bottom. Whatever our first line or first point of geometry, we are drawing a reference y-axis. Is it clear? Whatever our bottommost point, we are going to draw a reference x-axis. Is it clear or not? Please confirm. So जो मैंने ब्लैक लाइन से मार्क किया है वो आपका रेफरेंस x और रेफरेंस y होगा. Is it clear or not? Please confirm me students. ये क्लियर है? है ना? Is it clear or not? I hope it is clear all. Now for part number 1, we will calculate area. What is the area of part number 1? 100 cross 20. Yes or no? 100 cross 20. Please give me answer. What is your value? (2000). Unit is mm square. Now we are first of all calculating the area of the all parts. We are going to calculate first of all area of all the parts. So let me calculate area of part number 2 also. What is the area of part number 2? 80 cross 20. That is nothing but 1600 mm square. Now listen to me very carefully. Now this is a small geometry. Suppose in some case your length is 100,000 mm, okay, and your thickness is 20 mm. In that case your value will be at 20,000.
So in that case, we will reduce our digits by pressing E and G button on your calculator. I am writing here E and G button. Okay. If you have a calculator, try to calculate 100 plus 20, you will get 2000, and press E and G button. You will get 2 into 10 raised to 3. Is it okay? Press E and G button. Fifth row from bottom and second button from left. That is your E and G button. Is it okay? You will get 2 into 10 raised to 3. So now onwards, you have to make a practice to write your answer in form of digit. Why I am telling this? You will get understand after solving of 1 or 2 examples. Don't worry. So I hope it is clear to all of you. Now we need to calculate xi and yi. Now we have already learned a concept of center of gravity. What is center of gravity? Suppose this is your geometry. From center, from center to reference y-axis, you will get x. From center, reference x-axis, you will get y. Same concept we will apply. This is your rectangle. Uska center, uska center mein hi aayega. We have already discussed that. And from that center up to reference y, that distance is nothing but L by 2. Yes or no? 100 by 2. Is it clear or not? Is it clear or not? Please confirm me. Similarly, from same geometry, this is your center point of part number 1. Actually, this distance is your y1, but your geometry is finished at this point. So first of all, you need to calculate center of your geometry. That is nothing but in y direction 20 by 2. I hope this equation are remembered to all of you. Plus, we need to go up to your reference x-axis. We need to go up to reference x-axis. That is nothing but plus 80. I hope it is clear. This is 50 mm and this is 90 mm. Is it clear? Please confirm me, students. Clear enough? Now second for second rectangle, first of all we will calculate left portion of the flange. चलिए वो calculate करते हैं. We have already discussed how to calculate it. I am writing direct the value here. Okay, मैं यहाँ पे direct value calculate कर देता हूँ. Total length आपका 100 है, उसमें से 20 subtract करता हूँ. 80 divided by 2. This portion is nothing but 40. Yes or no? This portion is nothing but 40. Is it clear? So to calculate x for this element, suppose your center of second part, that is at this point. So from this point to this point, that is nothing but your x. That is nothing but 20 by 2 plus 40. Yes or no? Yes or no? X for part 2, 20 by 2 plus 40. So you will get 50 mm. Okay, fine. Chaliye. Similarly, from this center to this distance, that is nothing but your y. That is nothing but 80 by 2. क्योंकि आपका depth 80 है. I hope all of you are able to understand. Now what we have now actually to calculate x bar, we have equation summation ai xi by summation ai. From this equation we have prepared this table. So we need ai, we need xi, we need yi. That's the reason we have writing like this. ai into xi you have already calculated, put value here. ai into yi you have already calculated, put value here. Yes or no? So just first calculate and give me answer. चलिए मेरे को आंसर दीजिए. फर्स्ट पार्ट के लिए ai xi कितना आएगा? मेरे को 10 रेज़ टू पावर में आंसर दीजिए. 10 रेज़ टू पावर में आंसर दीजिए. eng प्रेस करना है आफ्टर कैलकुलेशन. चलिए आ रहा है 20 इंटू 10 रेज़ टू 3. चेक इट. आपको चेक करना है आपका कैलकुलेशन. मैं जो भी आंसर लिख रहा हूं आफ्टर प्रेसिंग eng लिख रहा हूं, आपको वेरीफाई करना. ai 2000 into 90, you will get 80 into 180 into 10 raised to 3. Please check it. This is my mistake. This is 100 into 10 raised to 3. Just a minute.
ओके, प्लीज कैलकुलेट, चेक कीजिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेकंड पार्ट के लिए 1600 into 50, you will get 80 10⁻³ and 1600 into just minute 180 not 160, मैंने कहाँ पे 160 लिखा है, मैंने 180 ही लिखा है। यस, मैंने 160 कहीं पे भी नहीं लिखा, ये आपका 100 है, 100 है। This is nothing but 64 10⁻³, लेकिन मैंने 180 लिखा। ओके, जस्ट मिनट, 2000 into 90, 180 तो लिखा है मैंने। 2000 into 90 कीजिए ना कैलकुलेट, 2000 into 90 180। हाँ ठीक है, चलिए। So now we have already calculated all the things. So first of all, we are summing up all the things. Summation AI, that is nothing but summation of all the areas, 2000 plus 1600, you will get 3600। ये वैल्यू का कैलकुलेशन कीजिए, 100 plus 80 180, so you will get actually here, just a minute, you will get here summation AIXI, ठीक है, that is nothing but 180 into 10⁻³, इसका यूनिट आएगा mm², इसका यूनिट आएगा mm³, (180 plus 64), you will get 244 into 10⁻³। I hope it is clear to all of you. So now what you have to now do, this is nothing but summation AIYI. We have already write the equation of summation AIXI. Put all the value here. What is your summation AIXI? 180 10⁻³ divided by 3600. 180 10⁻³ divided by 3600. Out. Okay. You will get value 50 mm. I hope it is clear to all of you. Similarly for y bar, 244 10⁻³ divided by 3600. You will get 67.77। प्लीज कंफर्म में ये आंसर आ रहा है सबको? हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है। AIYI का समेशन AIYI का वैल्यू 244.10⁻³ डिवाइड बाय समेशन AI, यू विल गेट फाइनल आंसर। प्लीज कंफर्म में, इज इट क्लियर और नॉट? हाँ, थोड़ा जल्दी करना अभी, बिकॉज वी नीड टू कैलकुलेट वन मोर एग्जांपल। ये आंसर आ रहा है, चेक कीजिए, is it clear or not? Students, fast, huh? Okay, chaliye. Now we need to represent this distance in our geometry. Now we have already discussed that what is x? X is nothing but distance from reference y axis, यानी कि आपका center of gravity in a with respect to y, that should be located something about 50 mm away from y axis, and in y direction something away from 67.7 mm from x axis. Yes or no? So in vertical direction your center of gravity is about 67.77. So just think that in a wave portion, what is the depth of wave? 80 mm. तो यानी कि वेब का जो सेंटर है उसके भी ऊपर होगा। यस और नो? वेब का जो सेंटर पॉइंट है उसके भी ऊपर होगा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि यहाँ पे ऐसा सोच सकते हैं आपका पूरा सिस्टम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल रहे जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। ओके, so this is nothing but I am changing the color so you will get better understanding. This is your y bar. We have already calculated this value, ये वाला value 67.77. Okay, and this value is you already calculated 50 mm. This is your x bar. Is it clear or not? Please confirm me. Clear है?
क्लियर है? एक्स बार वाई बार कैसे लोकेट करते हैं वो पता चल गया है? प्लीज कंफर्म मी. Is it clear? Can we shift to next example? Can we shift to next example? Please tell me. Okay, चलिए fine. Data will remain same. Now, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल कैलकुलेट करवाया, ऐसे ही आपको एक एग्जांपल सेल्फ स्टडी में दे रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करना है. You can solve this example as a part of your assignment also. Okay? I section कैलकुलेट करना है. आपको ये एग्जांपल अपने आप ट्राई करना है. 100 mm, 30 mm, 20 mm, 20 mm, ये पूरा डेप्थ दिया है 150 mm. इज इट क्लियर? सो सेम फॉर आई सेक्शन, ये आपका फ्लैंज होगा, ये भी आपका फ्लैंज होगा, और ये आपका फ्लैंज होगा. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? प्लीज कंफर्म मी. Now, in I section also data is given in a sentence form like that. Calculate center of gravity for a I section having upper flange. मैं उसको UF लिखता हूँ. That is nothing but 100 by 30 mm. Lower flange, that is nothing but ये suppose ये width है 100. Just a minute, student. Just a minute. Just hold on. हाँ, part 2 માં હમણાં 100 જ છે. Okay? If there is a unequal length, we will discuss later on. Don't worry. For unequal length we will discuss later on. वो मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले पार्ट में समझाऊंगा. ठीक है? सो लोअर फ्लैंज का पोर्शन है सपोज 100 by 30 mm, और वेब का पोर्शन है सपोज वेब का पोर्शन आपको नहीं दिया. वेब का पोर्शन सपोज ये किस में दिया है ऐसा सोच लो. सपोज जस्ट मिनट, फास्टली वी विल कैलकुलेट इट. 30 20 50 100 by 20 mm. Okay, so you have to calculate, you are able to draw such geometry.
ओके, यू आर एबल टू ड्रॉ सच ज्योमेट्री, आपको ये ज्योमेट्री ड्रॉ करना आना चाहिए. इज इट क्लियर और नॉट? प्लीज कंफर्म स्टूडेंट्स. इज इट क्लियर? Is it clear? Okay, fine. चलिए, I hope is it clear to all of you. We will going to calculate next example. Data will remain same. Your data will remain same. जो I am copying here, but I am going to calculate some more other kind of geometry. ठीक है, मैं T section नहीं consider कर रहा हूँ, मैं अलग geometry consider कर रहा हूँ. Just a minute. Okay. Calculate center of gravity for a section shown in below figure. ऐसा डेटा दिया हुआ. ओके, कोई एक सेक्शन दिया हुआ है, उसके लिए आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करना है. फॉर एन एग्जांपल ऐसा कुछ डेटा दिया हुआ. सो जस्ट लाइक दिस. Just a minute. My drawing is not good, but try to understand what I am drawing here. Data is given like this. I am not able to draw a semicircle perfectly, but you need to understand whatever shape I am drawing here, that is semicircle. ऐसा कुछ डेटा में दिया हुआ. Now, again, we can visualize that this is a case of area element. Clearly seen that this is rectangle, this is semicircular arc, and this is triangle. Okay, इतना clear है? Please confirm me. इतना clear है? अरे मेरे को ये कंफर्म कीजिए. चलिए, फाइन. थोड़ा जल्दी करना, मेरे को कैलकुलेटर यूज करके आंसर कीजिए. ये पूरा विड्थ है आपका, ये पूरा विड्थ नहीं दिया है. चलिए थोड़ा ट्विस्ट करता है. कितना पोर्शन दिया है? 100 mm. ये सेमी सर्कल है, उसका रेडियस है से 75 mm. ये ट्राइंगल का विड्थ है 50 mm, और ये रेक्टेंगल है, उसका डेप्थ दिया है 100 mm. Okay, so now just like previous case, first of all make a table. Part
आप पार्ट में उसका नाम भी लिख सकते हो, नंबर भी लिख सकते हो। एरिया एक्सआई, वाई, एआई एक्सआई, एआई वाई। Now from geometry, please tell me, can I say that this semicircle is already part of rectangle? Yes or no? This semicircle is already a part of rectangle. Yes or no? इतना क्लियर है? ये सेमीसर्कल रेक्टेंगल के एरिया में ही कवर हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं? यस और नो? फ्रॉम विजुअलाइजेशन we have already only 10 meter. Please give me fast answers. Okay, I hope all of you are able to understand. चलो पार्ट नंबर 1 को मैं रेक्टेंगल बोलता हूँ, रेक्टेंगल को मैं आरईसीटी लिखता हूँ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ। उसका एरिया कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपको रेडियस दिया है, तो आर यू एबल टू कैलकुलेट डायमीटर? जो आपको डेटा में नहीं दिया है आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर? दैट इज नथिंग बट 150। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो आपका लेंथ होगा रेक्टेंगल का 250, डेप्थ होगा 100, तो आपका एरिया कितना होगा? 250 बाय 100। चलिए मेरे को 10 टू पावर में आंसर दीजिए अभी। 250 into 10 into 100, you will get 25,000। मेरे को इतना लंबा आंसर नहीं लिखना, तो मैं लिख सकता हूँ 25 into 10 to 3। I hope it is clear to all of you. Similarly, let me calculate for triangle. Why I am calculating first of all triangle? I am telling just minute. उसका एरिया क्या होगा? 1/2 into 100 into 50। So 0.5 into 100 into 50. So you will get 2.5 into 10 to 3। 10 to 3 के पावर में आंसर लिखिए। यूनिट्स mm square। Now next, semicircle. It is important. Now as we have discussed already, your semicircle is a part of rectangle. So can I say that the area of semicircle already calculated in area of rectangle? Yes or no? Area of semicircle is already calculated in a part of rectangle. Yes or no? Am I right? So we need to subtract this area. That's the reason we are writing last. Okay, जो भी पार्ट हम subtract करेंगे उसको हम लास्ट में लिखेंगे। So minus, what is area of circle? Pi r square। तो area of semicircle, circle का एरिया का हाफ होगा pi r square divided by 2। So fast calculator, give me answer. So you will get 8.84 into 10 to 3। माइनस में आएगा 8.84 into 10 to 3 mm square। I hope it is clear to all of you. चलो जोड़े जोड़े આપણે સમેશન ai ગણી નાખે, કેમ કે એની આપણને જરૂર પડશે। What is the summation ai? 25 10 to 3 plus 2.5 10 to 3 माइनस करना है, खास ध्यान रखना है, माइनस 8.84 10 to 3। So you will get 18.66 10 to 3। 18.66 into 10 to 3 mm square। क्लियर है? चलिए हम x बार कैलकुलेट करते हैं, सेम वे एज कैलकुलेटेड इन प्रीवियस एग्जांपल्स फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट। दिस इज योर रेफरेंस y axis, this is your reference x axis। I hope it is clear to all, because we have discussed lots many times। This is your x, this is your y। From center of your geometry rectangle, center to reference y axis, you will get x। That is nothing but total length कितना है rectangle का? 250। So 250 divided by 2, you will get 1.5। What is y? From center of rectangle to reference x distance, this is your x। ये आपका x हुआ और ये आपका y हुआ। So 100 by 2, 50 mm। Similarly, we will calculate for triangle. Now we have already discussed for in a case of support reaction lots many time। From center to base, we have to consider now for a base। जब हम base वाला पोर्शन कंसीडर करें तो हम 1/3 वाला पोर्शन कंसीडर करते थे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए और एपेक्स के लिए।
2/3 वाला पोर्शन कंसीडर करते थे, whatever dimension, length, width doesn't matter. So from center to this, ये पूरा लेंथ आपका x होगा, लेकिन आपका ज्योमेट्री यहाँ पे खत्म होता है, तो आपको ये लेंथ पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो आएगा 1/3 इंटू बी, यानी कि 1/3 इंटू 50, क्योंकि विड्थ ऑफ ट्राइंगल योर 50 प्लस 250. I hope it is clear to all of you. So 50/3 plus 250. So you will get 266.67. And for y, ये आपका y पोर्शन होगा, that is nothing but 100/3, because आपका डेप्थ 100 डायरेक्टली मिल जाएगा. That is equals to 33.33. For a semicircle, just tell me, this semicircle is symmetrical about y-axis, yes or no? ये semicircle y के लिए symmetrical है, yes or no? Give me fast reply. ये semicircle y-axis के लिए symmetrical है, yes or no? And we have already discussed that if your semicircle is symmetrical about y-axis, you need to calculate center of gravity in y direction only. You will get center of gravity in x direction from your radius. So this is, suppose this is a center of gravity. So from this center, we need to go up to a, ये वाला distance आपका center of gravity for semicircle होगा up to in x direction, that is nothing but इतना पोर्शन है आपका रेडियस जितना 75 plus 100. I hope it is clear to all of you. 75, this is nothing but radius plus 100, that is nothing but 175. एंड ये डिस्टेंस हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, डिस्कस किया था टेबल में 4r/35. यस और नो? फॉर 2D एलिमेंट आपका रेडियस 75 रख दो और आंसर दो मेरे को 4 × 75 डिवाइडेड बाय 3 divided by 65. You will get 31.83. Keep in mind, this is distance, it will never negative. 31.83. Is it clear? Please confirm me. Please give me a quick check. चलिए फटाफट हम AIXI कैलकुलेट करते हैं. 25 × 10⁻³ into 125. You will get 3.125 × 10⁻⁶. 3.125 into 10⁻⁶. यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1.25 × 10⁻⁶. (2.5 × 10⁻³ multiply by 266.67. You will get 666.675 × 10⁻⁶. 666.675 into 10⁻³. यहाँ पे आएगा आपका आंसर 83.325 into 10⁻³. कीप इन माइंड यहाँ पे आपका आंसर नेगेटिव आएगा. वाई? बिकॉज जस्ट मिनट, -8.84 10⁻³ multiply by 175. You will get -1.574. ये आपका आंसर माइनस आएगा बिकॉज ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा. इज इट क्लियर? टेन इज टू सिक्स, सॉरी. लास्ट आंसर आएगा -281.37 into 10⁻³. So you have to calculate summation AIXI as calculated previous example. 3.125 10⁻⁶ plus 666.675 10⁻³ minus 1.547 10⁻⁶. You will get 2.24 10⁻⁶. 2.24 10⁻⁶. यूनिट लिख देना, आपको पता है mm क्यूब. Similarly 1.25 10⁻⁶.
plus 83.325 10 raised to 3 plus, sorry, minus 281.37 10 raised to 3. You will get 1.05 10 raised to 6 summation AIYI 1.05 10 raised to 6 mm cube unit लिख देना आप लोग. So what is your x bar? Summation AIXI divided by summation AI. And what is your y bar? Summation AIYI divided by summation AI. So first of all मैं y bar calculate कर रहा हूँ 80.66 10 raised to 3. Your y आपका y bar आएगा 56.375 mm and और आपका x bar आएगा 2.24 10 raised to 6 divided by 86.33 10 raised to 3. Your x bar equals to 122. Minute. 122.204. Is it clear? Now we will locate this distance from reference y. 122 जितना डिस्टेंस अवे है, यानी कि ये आपका 100 है, ये आपका सेंटर तक का डिस्टेंस 175 है. मैं राइट, इतना डिस्टेंस आपका 175, यानी कि बिफोर 175 आएगा सपोज. सो वी कैन से दैट योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेशन अबाउट हियर, से दिस इज द 122 वाला लाइन है, एंड इन y डायरेक्शन दैट इज द 56, यानी कि बिफोर सेमी सर्कल, बिकॉज सेमी सर्कल का रेडियस 75 है, ये रेडियस आपका 75 है. यहाँ पे मैं राउंड करके लिखता हूँ 75 mm. सो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे आएगा. सो ये आपका हो गया x बार पूरे सिस्टम का, ये आपका हो गया y बार. सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल. दैट्स इट फॉर टुडे. जस्ट अ मिनट, आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस. जस्ट अ मिनट. Okay, that's it for today. We will meet again in next lecture. Okay, have a nice day. I hope it is clear to all of you. If you have any question, we are going to discuss question and answer regarding this session tomorrow. Okay, that's it for today.